Morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, so here we will wait for 2-3 minutes so that other student can also join this session. Okay, students. So session start करते हैं. So here I am sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. So see, whenever we are writing any code in Python programming, even in every programming, so obviously some error may be introduced in our code. There may be different types of error that may occur in our code. So if we take the case of type of errors that may be introduced in our code, these error can be of three types.
So when we are writing any code in our Python programming, we can have syntax error, we can have syntax errors. These syntax errors are also known as parsing errors sometimes. We can have runtime errors. And there may be some logical error. So see, so these three types of errors may be introduced in our code. Syntax error, as the name suggests, syntax error will occur because of wrong syntax. As you know, in every programming, there is a specific way of writing our code, which is known as syntax. So if you are not following the syntax, we will be getting syntax error. Right? And now whenever we are getting syntax error, we will be getting message, some error message related to that, right? Runtime errors. Runtime errors, basically, these are also known as exceptions. Runtime error may occur in your code whenever any abnormal situation will arise in your code. Abnormal, there may be various reasons of this abnormal situation. Suppose I am dividing any value by 0. Then it is treated one abnormal situation. It will generate one exception when you are dividing any value by 0. Suppose you are having a list. In that list, we have 3 items. So last index value will be 2 for that. But when you are specifying index with this list, suppose you have written L5 in within square bracket. So obviously, it will generate some exception. Or suppose you are working with file and you have mentioned you are trying to read some content from the file, but whatever name you have given to your file, that file is not existing in the specified path. In that case, some abnormal situation may occur. So there may be various reasons because of which abnormal situation may occur. And whenever abnormal situation is occurring in your code, it will generate exception for that. It will just, so exception nothing, it's an abnormal situation, right? And in Python programming, actually this exception nothing, it's a class. Exception की हम बात करें, basically it's a class, और जो हमें generate होके आते हैं तो उसके object आते हैं. Everything is an object in Python. So जो exception आ रहे, जो values हमें यहाँ पे आएगी, whatever value will be displayed in error message, तो exception name के साथ आते हो, even you will be having some description also with that. So basically exception is Python object that represents error. Classes है basically the exceptions related that represents errors. So we have this. And now come to the logical error. See, you have written some code. There is no mistake from syntax point of view. ठीक है, code execute हो रहा है. Even no abnormal situation is occurring in your code. Code को हम execute कर रहे हैं तो properly execute हो रहा है मेरा code, कोई error नहीं आ रही है. But we are not getting desired output. We are not getting desired output. Means something is wrong with the logic. That is why we are not getting. So if somebody has written a very complex, implemented very complex logic, it may be difficult to deal with this logical error. So dealing with the logical error, dealing with the complex logical errors comes with the experience. जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा error के साथ deal करते हैं, उतनी हमारी troubleshooting better होती चली जाती है over the time. Right? सबसे easy यहाँ पे solve करना syntax error को होता है. और कोई abnormal situation अगर हो रही है आपके code में, so उसको कैसे हम handle करेंगे, उसी के बारे में ही session है हमारा. And so whenever an error is occurring in our code, we use exception handling. Except it's an abnormal situation. So how can we handle whenever any abnormal
सिचुएशन इज अकरिंग सो दैट आवर कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जैसी एरर आएगी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो कैसे हम हैंडल करें इसको, सो दैट कि अगर हम कुछ रॉन्ग कर रहे हैं वी कैन गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टू द यूजर। मोस्टली हम मीनिंगफुल मैसेज दिखा देते हैं, राइट, कि जैसे फाइल एग्जिस्ट नहीं हो तो हम दिखा सकते हैं इनवैलिड फाइल नेम, राइट। इंडेक्स, अगर आप रॉन्ग इंडेक्स दिखा रहे हैं तो आप बता सकते हो रॉन्ग इंडेक्स वैल्यू, मीन्स कुछ भी हम मीनिंगफुल मैसेज यूजर को दिखा देते हैं। इस वे में क्या होता है, यूजर को इन्फॉर्मेशन पता लग जाता है, मेरा कोड एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। So we'll be taking that, but before that I would like to mention various types of error that may occur in your code. तो कई तरह की errors हमारे कोड में यहाँ पे हो सकती है। So when we are talking about these different types, so different types of error may occur in our code. ये क्या क्या हो सकती है? So when you are dealing with कई तरह के error हो सकते हैं। See, when you are dividing any value by 0, it is also one exception. See, जब आप इस तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो it will generate exception. ये यहाँ पे exception name है, और exception I think these are classes basically. So it will give you the exception name, जो भी exception यहाँ पे हो रहा है, जो भी abnormal situation करो उससे related जो भी exception यहाँ पे बनाया गया, ये predefined exception है, it will give you the exception name with some description. ये कुछ description भी दे रहा है कि what is the reason of this exception, why this exception is being raised here. So it is giving some information about that also, right? So we are dividing by 0, which is not permitted. So this is so here we have 0 division error. There may be various other types of error. अगर हम syntax error, यहाँ पे कई तरह की error हो सकती है. See, suppose I am writing some code. So here, suppose I have written something like this. What do you think? Will it work? No, sir. Inval Why? syntax wrong, I guess. See, you have specified 3 variables C, A, B, and you are assigning A space B in this. So क्या कर रहे हैं, किस तरह की प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे, एक तो वो क्लियर नहीं है, इवन ए और बी भी डिक्लेयर नहीं है इससे पहले। तो अभी तो ये सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये सिंटैक्स एरर है, क्योंकि अगर यहाँ पे इनको लिखा हुआ है तो किस तरह की प्रोसेसिंग होगी इनके ऊपर, उसके लिए ऑपरेटर रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे नहीं है। चलो मैं ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल कर देता हूँ। सपोज आई हैव रिटन C इक्वल्स टू A प्लस B। नाउ व्हाट डू यू थिंक, विल इट वर्क नाउ? What do you think? Will it be working? No, क्योंकि A और B defined नहीं है. हाँ, because here A and B are not defined. Python में वेरिएबल तभी डिफाइन होता है जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं हमने. So it will give you name error and see the message. Name A is not defined. तो चलो A को डिफाइन कर देते हैं हम. So I am giving some value to A. A डिफाइन हो गया and again I am writing it. Now will it work? No, B is not defined. No, because same will be the case with B now. A के लिए तो किया but B के लिए तो नहीं किया. तो same case will happen C. So if you will try to access it, see it is showing name error, type error same रहा, name error, but यहाँ पे description change होगी. Name B is not defined. तो B को भी define कर देते हैं हम. चलो इसको भी कोई value दे देते हैं. अब ये भी define हो गया. Again if I am using this now, will it work now? Yes. Okay, fine. ठीक है. Obviously it will work now. But see, अगर मैं यहाँ पे करूँ, if I am specifying B, मैं value assign करता हूँ कुछ और, see that, and again I am using it. पहले तो इसको define करो, तो define ने declare कर रखा है. And again if I am trying to use it, will it work? No, concatenation error. तो यहाँ पे अब क्या होगा कि if you will try to do that, already I have mentioned
प्लस के साथ या तो दोनों इंटीजर हो, अगर इंटीजर हो मतलब कोई भी न्यूमेरिक टाइप होंगे तो एडिशन ऑपरेटर, दोनों स्ट्रिंग हो गए तो कॉनकैटिनेशन। बट यहाँ पे ये तो नंबर है और ये आपका स्ट्रिंग है, तो ये कंफ्यूज हो गया, प्लस को पता ही नहीं लग रहा मेरे को कैसे काम करना है, वेदर it should process as addition operator or whether it should process at concatenation operator. It is not clear. So if you'll try to access it, it will give you type error. See the message also. Type error, unsupported operand type or plus int and SR. So we are getting these different types of error, syntax error with some description. We have name error, we have type error. Sir, there was a question in the paper you took few days ago about the error. फिर उसका आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पेपर में था सर, कुछ वैल्यू एरर या ऐसा करके कुछ था। अच्छा, हमने जो किया था, क्विज जो किया था। हाँ सर। हाँ, तो वो एरर टाइप से होगा, क्योंकि ये एरर तो आप हमारी आती ही रही है जब भी कोई मिस्टेक हुआ है, बट अब इन को फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। अब इस तरह से फोकस नहीं किया था बस हमने, क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि इन्हीं को हम हैंडल भी करेंगे अभी। सो वी हैव वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आल्सो। वैल्यू एरर कब आएगा? जब कोई रॉन्ग वैल्यू एक्सपेक्ट कुछ और हो रहा है और आपने पास कुछ और कर दिया, तो वैल्यू एरर। तो कई तरह के एक्सेप्शन है, बहुत सारे। ये सब क्या प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये सब क्लासेस है, प्री डिफाइंड है, वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट। एक्सक्यूज मी जस्ट फॉर अ मिनट। Okay, so we were discussing about this type error. So see, we can have various other types of error also, like we can have overflow error. Overflow error. So ओवरफ्लो एरर कब होगी आपकी? कि जितना मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है। आई टेक वन एग्जांपल ऑफ इट आल्सो। इन मैथ मॉड्यूल there is one function exp which is used to calculate the exponent, right? E raised to power. So here if I'm taking some value, it will just give the exponent of that. So there is a specific range of it. अगर एक्सपोनेंट की देखें तो यहाँ पे इसकी एक रेंज है, इट इज समथिंग बिटवीन 709 एंड 710। सो 709 710 के बीच में कुछ रेंज। अगर मैं यहाँ पे करूँ 709.5, so it is showing value to you. But if I'm using 710, see, it will give you overflow error.
क्योंकि इसकी समथिंग यहीं पे 0.7 या 0.8 कुछ करके रेंज होती है. We try it. We are getting this, but if you are writing 0.8, you will be getting error. So in this case, जितनी memory चाहिए अगर उतनी available नहीं है, तो it will give you overflow error in that case. Similarly, we can have various other types of error, like we can have lookup errors. Lookup error, these can be two types of lookup errors. Index errors. We can have index error. And key error. नेम से पता लग रहा है किस केस में क्या एरर हो सकती है. Okay, case sensitivity. So suppose I am having a list and we have some values in that. We have 3 values in that. So if I am writing L1 1, it will work, no problem. We have one index. But if I am writing L1 5, it will give you index error because last index value is 2 as per this. But here written 5, so you are getting index error. That is showing description also list index out of range. Similarly, if you are dealing with some dictionary type of values, so if I am trying to access the values, if I am writing D1, it will work. But if I am writing D8, what do you think? Will it work? Yes, will it work? No, sir. Key No, error. it will Yes. give you key error because whenever we are writing with dictionary, whenever we are writing something with this square bracket, it will look for this information as a key, but this value is not occurring as a key here. We have only 2 keys, 1 and 2, so it is not occurring as a key here. That is why we are getting key error. So we have this kind of error. So we can have different types of error. एक error दिखाते हैं recursion error. Recursion error. Recursion क्या होता है? पहले यूज किया हमने अपने फंक्शन सेशन में. When a function is calling itself, this process is known as recursion, and this function is known as recursive function. But recursion के साथ एक कंडीशन होती है. जैसे recursion स्टार्ट होता है कि लूप स्टार्ट हो जाता है बेसिकली. तो लूप स्टार्ट करने के लिए क्या स्पेसिफाई करते हैं हम रिकर्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हाँ, उसके लिए हम यहाँ पे बताते हैं अपने बेस कंडीशन, राइट? बेस केस बताते हैं. तो वहाँ पे हमारी कोई बेस कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे हमारा ये रिकर्सिव प्रोसेस स्टॉप हो जाए. ये जो लूप स्टार्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिकर्सन, इट शुड बी स्टॉप एट सम पॉइंट. अदरवाइज इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट लूप विच इज नॉट accepted here. So it will may cause of our system crash, program crash. So if I take one example of it, suppose मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ यहाँ पे and here I am defining one method def m, एक मेथड मैं डिफाइन कर रहा हूँ and here I am returning m without any base condition. अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ तो this is I am calling function is calling itself, so it's a recursion. So जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डेफिनेशन से हो जाएगी. सपोज कुछ भी नेम दे दिया हमने, रिकर्सन एरर डॉट py, सपोज इस तरह का कुछ नेम हम दे देते हैं. तो ये भी डिफाइन हुआ है. इफ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन नाउ, सी इट विल गिव यू रिकर्सन एरर. वैसे तो बाकी लैंग्वेजेस में क्या हुआ, एक बार ये रिकर्सन एरर होती है मतलब इनफाइनाइट लूप बनता है, तो ये आपका प्रोग्राम चलता ही रहेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आपका जो सिस्टम है हैंग हो सकता है. लेकिन यहाँ पे पाइथन के साथ पाइथन इंटरप्रेटर को ऐसे डिफाइन किया गया कि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स तक तो ये चलेगा, लेकिन अगर वो चलता ही जा रहा है तो पाइथन इंटरप्रेटर विल रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे ये एरर हो गई है. इट इज नॉट, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो आफ्टर सम स्टेप्स it will automatically close the program and give you this information, recursion error, maximum recursion depth exceeded, right? So you will be getting this kind of error. So here we have this recursion error,
नाउ कम टू अनदर केस, सपोज चलो इसी में मैं एक और केस ले लेता हूँ। सपोज आई एम क्रिएटिंग ए क्लास, नेम ही दे दिया मैंने क्लास 1। Within this I am defining one constructor. Within this I am declaring two variable because I am declaring two instance variable here. यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए और इसका पर्पज क्या है कंस्ट्रक्टर का, इट यूज्ड टू इनिशियलाइज क्लास वेरिएबल। तो यहाँ पे आई एम डिक्लेयरिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल, सपोज सेल्फ डॉट ए, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर एक ही वैल्यू से। सिमिलरली आई एम डिक्लेयरिंग अनदर इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट बी and initializing it with the parameter through the value parameter b of this constructor, right? So here I am defining this और simply फिर कोई मैं इसकी मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे और सिंपली इसमें कुछ नहीं है, इस मेथड सिंपली मेरा एक मैसेज दिखा रहा है, कोई मैसेज दिखा देते हैं सैंपल मेथड। सो बेसिकली हियर आई एम डिक्लेयरिंग क्लास और उसके साथ यहाँ पे दो मेंबर्स है, कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, एंड वी हैव दीज वेरिएबल्स आल्सो, राइट? सो दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नोन एज एट्रीब्यूट ऑफ दिस क्लास। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन स्टोर कर ली क्लास की। अब इफ आई एम यूजिंग इट, अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द फीचर ऑफ इट। सो इफ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास 1, दो पैरामीटर पास के उनकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। सपोज आई एम पासिंग 10 20। सो ऑब्जेक्ट हो गया और अब सी ऑब्जेक्ट के साथ ये वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो एक्सेसिबल है इसके लिए। तो अगर मैं ob.a लिख रहा हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ob.b लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ob.m लिख रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि सब ये पार्ट है क्लास के। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ob.cdec, विल इट वर्क? या कैसे भी एट्रीब्यूट की तरह या फिर इस वेरिएबल की तरह या फंक्शन की तरह, विल इट वर्क नाउ इफ आई एम राइटिंग इट? डू वी हैव समथिंग लाइक cdec here? No, sir. So if you try, No. if you are referring such type of name with the object which is not available in this class जिसका object create किया है, so in that case you will be getting attribute error. It is showing that class 1 object has no attribute named cdec. इस तरह का कोई वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। So we can have different types of error and based on type of error which is occurring in your code we are having exception. तो ये सब हमारे exceptions है। An exception are nothing, these are classes। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि if you want to see all the exception here, तो क्या यूज करते हैं अगर मेरे को exceptions की इंफॉर्मेशन देखना हो? हाँ जी, बताया था एक फंक्शन, बिल्ट इन नेम स्पेस के फंक्शंस को देखना है तो क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन थ्रू विच वी कैन सी all the functions name which are available in built-in namespace, or in other words I can say for which I need not to import any module. dir built in. dir. Yes, so dir double underscore built-ins double underscore. So if you are saying अभी तक हम फंक्शन पे फोकस किया था, and now come to these, तो ये सब जो है ना, these are exceptions, these are classes and these classes are referring a particular type of exception। ये जो की है ना, तो कई तरह के exceptions होते हैं जो वो डिपेंड है कि हम किस तरह का यहाँ पे केस जनरेट कर रहे हैं। Here you can see the name of those। तो कुछ जो हमने लिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ का एग्जांपल जो लिया वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे you can see name error, overflow error, so we have various types of error, right? Import error, कोई ऐसा मॉड्यूल आप इंपोर्ट करें जो अवेलेबल है ही नहीं, file not found error, file exist error, so we can have various runtime errors, right? So we can have various types of error, value error, so it depends on कि मेरे कोड में किस तरह का केस वहां पे जनरेट हो, उसी से रिलेटेड एक्सेप्शन जनरेट करके आपको दे देगा। सो हाउ कैन वी हैंडल दिस, हाउ कैन वी हैंडल दिस? अभी तक जो किया सारे को पहले
पेस्ट कर लेते हैं so that you can use this for your reference also. तो अभी तो हमने एरर टाइप्स की बात की है, अब इनको हम हैंडल करेंगे. हाउ कैन यू हैंडल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर? अगर कोई भी किसी भी तरह की एरर मेरे कोड में आ रही है, हाउ कैन वी हैंडल दिस? Now we will be discussing about that. So for that purpose we are using exception handling. Basically there are two ways to handle your error: assertion and exception handling. दो वे है. अगर छोटी मोटी यूटिलिटी है, छोटी मोटी एरर है, एक ही टाइप की एरर आ रही है, तो we can make use of assertion. Otherwise mostly we use exception handling, क्योंकि जो it is more flexible, right? यहाँ पे इसके साथ limitations है. पहले तो इसको सेव कर लेते हैं. सेव स्टेबल. सो सबसे पहले मैं असर्शन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाउ दिस असर्शन वर्क. फिर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पाएंगे. मेनली वी आर कंसर्न विद दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो वील सी हाउ कैन वी हैंडल whenever any particular exception is occurring. अभी क्या है कि जब भी कोई एक्सेप्शन मेरे कोड में आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरा कोड आगे वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाती है, तो ऑब्वियसली वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं होता मेरे कोड में. सो हियर तो मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई एक्सेप्शन है उससे रिलेटेड कोई मीनिंगफुल मैसेज यूजर को डिस्प्ले कर दिया जाए. मोस्टली हम यही करते हैं, राइट? और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो और नेक्स्ट टाइम यूजर शुड टेक केयर ऑफ इट कि क्या रॉन्ग हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो उस ऑपरेशन को प्रॉपर वे में प्रॉपर वैल्यू के वैलिड वैल्यू के साथ परफॉर्म करें. सो हियर सो वी विल हैव अ लुक एट आवर पीपीटी फर्स्ट. सो these are all these things. So when writing a program, we more often than not will encounter error. Error caused by not following the proper structure of language called syntax error, right? We can have various other types of error also. तो जो exceptions generate होते हैं, तो there may be different types of exception which may occur as per your code conditions. So we can have file not found error, zero division error, import error kind of thing. Here you can see when you are dividing any value by zero, you are getting zero division error. In open you are writing such type of name which is not existing in the specified directory. यहाँ पे मैंने full path नहीं लिखा, तो obviously current working directory में होना चाहिए, बट अगर वहाँ पे नहीं है इस नाम की कोई फाइल, तो ये आपको दिखाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर जब आप इसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो illegal operations can raise exceptions. There are plenty of built-in exception available in Python programming, and you have seen the name of some of them. We can view all the built-in exception using a local built-in function या dir. ये लोकल उसमें तो काम करता था, बट प्रॉपर अगर देखना हो 2.7 के कोडिंग है, बट प्रॉपर अगर मैं देखना हो तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस dir. हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द एक्सेप्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ क्या क्या मीनिंग हो सकता है. तो असर्शन का तो हम लेने ही जा रहे हैं केस. उसमें अगर फेल होता है असर्शन तो असर्शन एरर आता है, और अगर नहीं है तो अभी यू विल सी कि कैसे हम इसको यूज करेंगे. एट्रीब्यूट एरर, योर एंड ऑफ फाइल एरर, फ्लोटिंग पॉइंट. सो डिपेंडिंग ऑन our code we can have these different types of error. सब उनको हम कुछ का केस भी लेंगे, यहाँ पे कुछ काम ले चुके हैं एरर का. So to handle, so now we will see how can we handle these exceptions, these abnormal situations which are occurring in our code, so that our code can be executed properly. So उसके दो तरीके हैं, assertion और exception. Mainly हम exception use करते हैं, but assertion का भी एक केस लेते हुए चलते हैं. So an assertion is a sanity check, means you can turn on or turn off when you are done with your testing of the program. In assertion, what we do, an expression is tested, and if the result comes up false, an exception is raised. तो कोई कंडीशन हम डिफाइन करते हैं, किसके साथ असर्शन को रेफर करने के लिए हम assert कीवर्ड यूज करते हैं. assert का जो सिंटैक्स है, इट विल बी लाइक दिस. एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे जो स्पेसिफाई करेगा कंडीशन को, एंड इट विल बी रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स. तो इस केस में क्या है कि अगर मेरा assertion false है तो एक्सप्रेशन टेस्टेड, एंड इफ द रिजल्ट कम्स अप फॉल्स एन एक्सेप्शन इज रेज्ड. तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक्सेप्शन रेज होगा, और एक्सेप्शन जो रेज होगा उसका मैसेज भी हम अपने से दे सकते हैं, सेकंड पैरामीटर व्हिच इज ऑप्शनल, राइट? फॉर एग्जांपल, तो इस तरह का केस होता है हमारे केस में. असर्ट कीवर्ड के थ्रू हम असर्शन एक्सप्रेशन चेक करते हैं, और वहां पे उसके साथ जो कंडीशन अगर ये ट्रू है, सो इट विल कंटिन्यूअस रनिंग प्रोग्राम. ट्रू है तो मेरा कोड जो है नॉर्मल वे में काम करेगा, लेकिन अगर उसके साथ जो कंडीशन है फॉल्स हो जाए
तो ये असर्शन एरर रेज करेगा और जो भी मैसेज आपने दिया होगा एरर के लिए उस मैसेज को डिस्प्ले करेगा उस एरर पे। तो उससे भी एक आइडिया मिलता है यूजर को क्या रॉन्ग हो गया। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दिस, हियर वी आर यूजिंग दिस। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इंटेंशनली मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 रखी है। उसके बाद मैंने कंडीशन लिखी, असर्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 कोमा और एरर मैसेज इट इज डिफाइंड बाय यू। तो असर्ट के साथ क्या है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो नॉर्मल तरीके से काम करेगा। नॉर्मल तरीके से काम करेगा इसका मतलब नेक्स्ट लाइन पे भी जाएगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो रेज करेगा एक्सेप्शन एंड इट विल डिस्प्ले दिस मैसेज। तो इन अवर केस दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, this denominator not equals to, this condition is False. true or false? It is false. false है तो exception raise होगा और ये मैसेज दिखाएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे इस केस में इस तरह का ये मैसेज दिखाएगा, assertion error, और मैसेज वही आएगा जो हमने डिफाइन किया। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती तो नॉर्मल फ्लो की तरह काम करता, इस लाइन पे जाता, कैलकुलेट करता और उसका आउटपुट दिखाता। सो इट इज वर्किंग लाइक दिस। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, सपोज ये भी मैं असर्शन के लिए ले रहा हूँ, प्रिंट इस तरह का मैसेज भी मैं पास करता हूँ। सपोज here we are going to demonstrate use of assert statement, और यहाँ पे हम सपोज आई एम डिफाइनिंग वन फंक्शन। अब फंक्शन के फॉर्म में मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं फंक्शन किस लिए बना रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर करे, अगर यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर कर रहा है तो एक्सेप्शन रेज करे, और पॉजिटिव है तो ये इसको नॉर्मल फ्लो की तरह, नॉर्मल कंडीशन की तरह ले और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो प्रॉपर आउटपुट के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू पास करें तो इसको एरर की तरह ट्रीट करे और उसके लिए कोई मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करे। तो नेगेटिव, इसको मैंने नेम इसीलिए दे दिया नेगेटिव चेक, और पैरामीटर पास करेंगे। इस पैरामीटर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रेज होना चाहिए एक्सेप्शन, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे इसको यूज करने के लिए असर्ट कंडीशन में मैंने बता दिया नम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो रेज करेगा एक्सेप्शन और उसका मैसेज आप दे सकते हैं कुछ भी, जो भी आप लिखना चाहें। सपोज मैंने यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड, इस तरह का कोई मैसेज यूजर को डिस्प्ले हो। और अगर ऐसा नहीं है, तो सिंपल ये रिटर्न करे कुछ भी, जो भी हम चाहे। सपोज मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करा लेते हैं, चलो नम इनटू नम, जो भी आप करना चाहते हैं यू कैन राइट डाउन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली। सो इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, name देता हूँ assertion example dot py and we are storing it our location. Somebody is on unmute, I think. Please mute yourself. So यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन भी यहाँ पे स्टोर हो गया जो हमने डिफाइन किया। अब इसको यूज करते हैं फंक्शन को। सो हियर इसको मैं कॉल करता हूँ नेगेटिव चेक। तो सी अगर आप पॉजिटिव वैल्यू पास कर रहे हो उसके साथ तो इट विल वर्क इन नॉर्मल वे, बिकॉज इन दिस केस ही कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे नम की वैल्यू 12 पास की तो कंडीशन इज दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू इट विल वर्क इन नॉर्मल फ्लो। सो ये आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा देगा इन दोनों का। लेकिन बट व्हेन यू आर कॉलिंग एंड इफ यू आर पासिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ इट, सो दी एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो ये जो एक्सेप्शन जो भी मैसेज दिया उसको डिस्प्ले करेगा। सी तो यहाँ पे इसने दिखाया असर्शन एरर, लेकिन उसके साथ वही मैसेज जो आपने स्पेसिफाई किया है, इट इज यूजर डिफाइंड, राइट। तो छोटी मोटी यूटिलिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट मच फ्लेक्सिबल। तो मेनली हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। तो इस पे बात है। तो कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन वट एवर कोड वी आर राइटिंग, वी कैन स्पेसिफाई अवर कोड थ्रू सम ब्लॉक्स which are known as try block, accept block, and optionally finally block. So we can write down our code as per these block structures.
तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन ट्राई ब्लॉक वी विल बी राइटिंग अवर मेन कोड. हियर वी विल बी राइटिंग अवर मेन कोड. सो हियर, जिसमें मेरे को लगता है मेरे कोड में एरर हो सकती है, आई विल बी राइटिंग मेन कोड हियर. And if some error is occurring in your code, डायरेक्टली वहीं पे आइडियली भी ले लेते हैं. इसके बनाते यहीं पे मैं लिख लेता हूँ. So here we will be writing our main code, and if you feel that some error may be introduced in your code, you can write down the code to handle this here. So here you will be writing the code to handle this. यहाँ पे हम कोड लिखेंगे to handle this thing actually. So here we will be write code to handle the error which may occur in your main code, right? So जैसी एरर होगी इस कोड में तो तुरंत कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है उस पॉइंट से जहाँ पे एरर है इस एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में हम उसकी हैंडलिंग का कोड लिखते हैं. मोस्टली मीनिंगफुल मैसेज दिखा देते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट योर कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द फाइनली ब्लॉक. अब फाइनली ब्लॉक में हम क्या करते हैं, हियर वी विल राइट कोड, विल बी राइटिंग कोड always be executed, that will always be executed irrespective of error. Error means कैसे होगा फ्लो, अगर कोई एरर आ रही है मेन कोड में तो कंट्रोल तुरंत शिफ्ट हो जाता है इस ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्ट ब्लॉक पे, हैंडलिंग होती है, और हैंडलिंग के बाद अगर आपने फाइनली लिखा है तो इट विल मूव टू द फाइनली. सपोज इफ देयर इज नो एरर इन दिस कोड, इफ देयर इज नो एरर इन दिस कोड योर कंट्रोल विल बी शिफ्टेड फ्रॉम ट्राई टू फाइनली. आफ्टर दैट पहले तो ट्राई का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनली. मींस चाहे आपके एरर हो रही है या नहीं हो रही है, फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इफ इट इज स्पेसिफाइड. हाँ, फाइनली ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है फाइनली को यूज करना. तो फाइनली को हम कब यूज करेंगे, कभी इस तरह का कोई कोड मेरे को जो हर सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो, मैं चाहे इस कोड में एरर हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट है कि कोड का जो मेरे को एग्जीक्यूट करना ही करना है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ फाइनली. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू कैन अवॉइड इट. लेकिन ट्राई लिखा है तो ट्राई के साथ एटलीस्ट एक एक्सेप्ट जरूर होना चाहिए. और इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं. इट मे बी द केस कि अब इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं, उसके लिए कोड लिखते हैं. इसके क्या वेरिएशन हो सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शनली एल्स भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभी. यहाँ पे एल्स भी यूज कर लेते हैं. ये क्या होगा, इट विल बी, हालांकि ये ऑप्शनल पार्ट है, ये भी हमेशा हम यूज नहीं करते. इसको मैं पीपीटी से ही बता देता हूँ, इसलिए ये रखते हैं जो मेन हम यूज करते हैं. सो कम टू द पीपीटी नाउ. हियर वी कैन हैव दिस try accept finally. So here whatever code you have written in try, it will be executed and there will be some error. अगर कोई एरर आती है तो क्या होगा, सपोज अभी तो हमने ये कंसिडर किया है कि वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग हियर, एल्स जैसा कुछ नहीं है. तो ऑब्वियसली अगर पहले कोड एग्जीक्यूट हुआ, इस कोड में अगर एरर है, इफ वी हैव एरर, if we are having error in this code, then your control will be shifted from this block to accept. एक्सेप्ट के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा ये वो कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव ऑन टू द फाइनली ब्लॉक, और फाइनली में जो कोड लिखा होगा दैट विल वर्क. सो इट इज वर्किंग लाइक दिस इन दिस केस, राइट? एंड इफ देयर इज नो एरर, सो इट विल एग्जीक्यूट दिस कोड. कोई एरर तो है नहीं,
तो डायरेक्टली ये कंट्रोल जो है ना आपका इस कोड से सीधा फाइनली पे शिफ्ट होगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा अगर आपने फाइनली स्पेसिफाई किया है तो ये तो नॉर्मल फ्लो है। अगर आपने एल्स भी यूज किया हुआ है, ये कब काम करता है? अगर आपने आपके ट्राई ब्लॉक के कोड में कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर नहीं है, नो एरर वाला ही केस है, राइट, ये नो एरर वाला ही केस है, देन योर कंट्रोल विल बी शिफ्टेड, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर एल्स पे जाएगा, एल्स के अकॉर्डिंग जो कोड लिखा है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा ना, आफ्टर इट विल मूव ऑन टू द फाइनली इफ यू हैव स्पेसिफाइड। तो ये कब आएगा? जब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके कोड में एरर आ जाए, एरर आ जाएगी तो क्या होगा? तो जैसी एरर आई, जैसी मूवमेंट एरर अकर होती है तो आपका कंट्रोल सीधा एक्सेप्ट पे ट्रांसफर होता है, एक्सेप्ट से इसको हैंडल करेगा और उसके बाद ये सीधा आएगा फाइनली पे, एल्स कंसीडर नहीं होगा इस केस में, ये सीधा यहां से फाइनली पे आ जाएगा अगर एरर वाला केस है, राइट। So it is working like this, but this part is optional. So here, now see the syntax of it. So here, this is the syntax of it. Syntax part देखते हैं पहले exception handling का. See, with one try, अगर आपने एक try block यूज किया है, with one try you can use one or more than one accept. तो एक तो एटलीस्ट एक तो करना ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ट्राई किया और एक्सेप्ट किया ही नहीं आपने तो इट विल बी रॉन्ग। फाइनली आपका ऑप्शनल है, फाइनली को नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सेप्ट एक ट्राई के साथ एटलीस्ट एक एक्सेप्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई एरर है उसको हैंडल करने के लिए आपने इसको किया है। एंड इट इज ऑल्सो केस विद वन ट्राई यू कैन यूज मल्टीपल एक्सेप्ट, और हर एक एक्सेप्ट के साथ आप डिफरेंट टाइप ऑफ एरर को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये जो एक्सेप्ट है ना, इसके कई वेरिएशन होते हैं। एक्सेप्ट के साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके साथ किसी एक्सेप्शन का नेम लिख दें, कोई भी एक्सेप्शन जो आपके कोड में अकर हो रहा है, एक्सेप्शन का नेम भी लिख सकते हैं, राइट। और कभी कभी हम इस एक्सेप्शन की कोई इंफॉर्मेशन को एज इट इज डिस्प्ले करना चाहें, अगर ये प्रीडिफाइंड है तो कोई वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं इस तरीके से एज ई, और उसको भी हम यूज कर सकते हैं अपने मैसेज को दिखाने के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे और ये सारे वेरिएशन को देखेंगे। अभी मैं केवल सिंपल तरीके से लिख रहा हूं जिसमें मैंने कोई एक्सेप्शन नेम नहीं दिया, बट ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक्सेप्शन नेम दे सकते हैं। इवन इट इज आल्सो पॉसिबल with except you can specify only one exception name, or it is also it may also be the case with one except you can specify multiple exception name, और अगर multiple exception specify कर रहे हो with the same except, so these should be separated from each other by using comma, और multiple है तो आपको parenthesis में पास करना पड़ेगा। सिंगल को आप parenthesis में पास करें ना करें it is not necessary, but मल्टीपल है तो कोमा तो होगा, कोमा सेपरेटेड बताने के लिए अलग अलग है, और यह parenthesis में आपको यूज करना पड़ेगा। So here this is the syntax part। अब हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं, तो I'll be taking it। तो कुछ केस जनरेट करते हैं और फिर इसके डिफरेंट वेरिएशंस भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज आई हैव रिटन सम कोड, मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज अभी बाकी को तो मैं कर देता हूँ, चलो कमेंट इनको मैं केस लूंगा इनका भी, अभी इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। So here suppose what I am doing, I am having two variable,
and dividing the value of A by B, and after that printing the output. But in this case, will it work या error आएगी? ये ट्राई के अंदर जो मैंने कोड लिखा है ये काम करेगा या इसमें एरर आएगी? डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो एरर आएगी. तो उसको हैंडल करने के लिए वी कैन राइट कोड एक्सेप्ट, और मोस्टली हम क्या करते हैं, वी डिस्प्ले सम मीनिंगफुल मैसेज विच इज डिफाइंड बाय यू. कोई यूजर मैसेज दे देंगे, तो यू कैन राइट एनीथिंग हियर. सपोज आई एम राइटिंग यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, सपोज इस तरह का कुछ मैसेज दे दिया. और फाइनली यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बट अभी लिया है तो एक केस देख लेते हैं इसका भी. प्रिंट तो जब भी फाइनली आए तो ये मेरे को बस एक मैसेज दिखा है प्रोग्राम एंडेड. ये इस तरह का मैंने यहाँ पे मैसेज पास, इसी बस पे ये पता लग जाएगा कि मैं फाइनली ब्लॉक में रीच कर गया. सो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का केस ले लिया. So see now, when I'm executing it, इसको नेम दे देता हूँ मैं exception handling y and storing at our location. तो see क्या हुआ, अब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ मेरा, हैंडल किया हमने इसको. अब एरर नहीं दिया इसने क्या किया, सी कैसे काम किया. सो हियर पहले ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे इस लाइन पे आएंगे व्हेन यू आर डिवाइडिंग 10 बाय 0 इट इज एरर. तो जैसे ये सिचुएशन आएगी एक्सेप्शन रेज होगा. एक्सेप्शन रेज होगा तो तुरंत आपका कंट्रोल इस पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा एक्सेप्ट पे, और एक्सेप्ट में जिस तरीके से आपने हैंडल किया होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो प्रोसेस करेगा कोड को एंड रिटर्न द वैल्यू. तो हमारे केस में हम जस्ट प्रिंट कर रहे हैं मैसेज, तो इसने इस मैसेज को प्रिंट कर दिया. उसके बाद कंट्रोल जाएगा आपके फाइनल ब्लॉक पे एंड इट इज डिस्प्लेइंग प्रोग्राम एंडेड, राइट. तो इट इज, अगर मैं कोई प्रॉपर वैल्यू करता 2, अब कोई एरर नहीं होगी. एरर नहीं होगी तो ये इसको प्रोसेस भी करेगा, प्रिंट भी करेगा इस वैल्यू को. अभी तो प्रिंट भी नहीं किया क्योंकि यहाँ तक पहुंचा ही नहीं. प्रिंट करेगा और जब इसके बाद फिर आएगा फाइनली पे. सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, तो इसने अब आउटपुट दिखाया इसके अकॉर्डिंग, और फिर कंट्रोल शिफ्ट हुआ फाइनली में, तो फाइनली से प्रोग्राम एंडेड आ गया, राइट. ये है. अब सपोज मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, विल इट वर्क? नो सर, इंडेक्स का प्रॉब्लम है. तो अब यहाँ पे इंडेक्स से रिलेटेड एरर आएगी, तो मैसेज भी आप या तो ऐसे करें, अगर आप इफ यू फील कि इस तरह का कुछ हो सकता है तो आप यहाँ पे इंडेक्स एरर का मैसेज लिख सकते हो या कोई प्रॉपर मैसेज लिख सकते हो. तो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे वही प्रिंट होगा. सपोज अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, चलो मैं यही रहने देता हूँ, अगर जो भी वहाँ लिखे हमें मीनिंगफुल लिखना चाहिए तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. तो इट इज शोइंग 5.0 यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 प्रोग्राम एंडेड. लेकिन है ना प्रॉपर नहीं बना. सपोज अगर मैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कोड में ये भी एरर हो, इसको मैं फिर से 0 कर देता हूँ, और ये वाली इंडेक्स एरर भी हो, इंडेक्स एरर भी हो, और यहाँ पे अगर देखे जाए इससे कौन सी एरर आएगी, ये भी एक एरर क्रिएट करेगा. कौन सी एरर आएगी इससे, कौन किस टाइप की एरर हो सकती है? जो भी आपने वेरिएबल नॉट डिफाइंड, एट्रीब्यूट का लेना देना तब होता है जब क्लास बनी है. अगर कोई ऐसा नेम आप लिखे जो डिफाइन ही नहीं है कहीं पे, तो क्या एरर आएगी? मतलब ये जो नेम है ये डिफाइन नहीं है, तो किस तरह की एरर आएगी? नेम एरर. वेरिएबल अनडिफाइंड. अच्छा, नेम एरर. हाँ, उसके लिए क्या होता है? नेम एरर. किस तरह की एरर आती है? नेम एरर. ठीक है ना. अभी तक ध्यान नहीं देते थे हम इन चीजों पे, लेकिन अब आप ध्यान देंगे. तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा नेम करे ना, आई थी ना नेम ए इज नॉट डिफाइंड, इसलिए भी लिया था मैंने स्पेसिफिकली इनको कि थोड़ा सा हमारा ध्यान जाता रहा इन चीजों पे. सो नेम एरर, तो यहाँ पे नेम एरर आएगी. तो 3 तरह की एरर हो रही है मेरे कोड में. इस लाइन पे 0 डिवीजन एरर, यहाँ पे हो रही है हमारी 0 डिवीजन एरर अगर आप देखें. सो इस पॉइंट पे जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आएगी क्योंकि क्लास इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे आपकी नेम एरर आएगी. तो अब इसको प्रॉपर करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए एक काम करते हैं, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एट ए टाइम केवल एक ही एरर हैंडल होती है.
क्योंकि जैसी कोई एरर आएगी, जैसी कोई एरर आती है तो यहाँ पे कौन सी लाइन में सबसे पहले एरर आएगी? हाँ जी, कौन सी लाइन में सबसे पहले एरर आएगी? प्रिंट सी। जो सबसे ऊपर रहेगा। तो प्रिंट सी से पहले क्या ये चल जाएगा? नहीं सर, सी पर। नहीं ना, तो एरर विल अकर एट दिस पॉइंट। तो मोमेंट एनी एरर इज अकरिंग इन कोड, इमीडिएटली आपका कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है ट्राई से एक्सेप्ट पे, और वहां पे इट विल लुक फॉर द हैंडलिंग ऑफ इट, वहां पे उसको हैंडल करेंगे आप अपने तरीके से, राइट। तो जब वो हैंडल हो जाएगा, उसको हैंडल होएगा तब तो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, और एक बार हैंडलिंग के बाद ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट से दोबारा ट्राई पे कंट्रोल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। उसके बाद वो मैसेज दे देगा यूजर को, तो यूजर परफॉर्म करेगा दोबारा ऑपरेशन, एंड ही विल टेक केयर कि भाई जीरो पास ना करे। तो अगर वो जीरो पास नहीं कर रहा है तब वो नेक्स्ट जाएगा, कोई एरर आती है तब उसका उससे रिलेटेड मैसेज। तो हम इसको, इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं। इफ वी आर श्योर अबाउट एक्सेप्शन, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट आपके एक्सेप्शन का नेम। सपोज यहाँ पे मेरे को जीरो डिवीजन एरर को करना है, ये हमारे एक्सेप्शन का नेम था, जीरो डिवीजन एरर। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हैं। इस तरह से बाकी के साथ भी आप लिख सकते हो, जीरो डिवीजन एरर। इसी तरह बाकी के भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। As I have mentioned, with one try you can use multiple except also। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंडेक्स एरर, सपोज इंडेक्स एरर, और यहाँ पे हमने कर दिया नेम एरर। सो यहाँ पे फिर आप कुछ भी जो भी मैसेज दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। इनवैलिड इंडेक्स suppose it is defined by you, and here we can specify name is not defined, suppose कुछ भी जो भी आप देना चाहते हैं, कोई मीनिंग हो। सो अब यहाँ पे तो एट ए टाइम एक ही होगा, तो कौन सा हैंडल होगा? जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कौन सा अब मैसेज आना चाहिए? तो एट ए टाइम तो जाएगा, तो किसी एक्सेप्ट पे, तो किस एक्सेप्ट पे जाएगा ये? कौन से एक्सेप्ट पे जाएगा? जैसे इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये उसी पे जाएगा जो एरर सबसे पहले हो रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जीरो डिवीजन एरर इज अकरिंग, सो इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग इट, इट इज शोइंग, यू कैन सी, ये सीधा यहाँ पे गया, रिकॉग्नाइज के एंटर कर गया, एंड यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि सपोज इसको मैं कर देता हूँ 2, अब ये एरर नहीं है यहाँ तक, तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर L1 पे आएगा, यहाँ पे एरर आएगी इसकी। तो अब कौन सी एरर हो रही है? अब कौन सी एरर अकर हो रही है? इंडेक्स एरर। इंडेक्स की आ रही है, तो यहाँ पे जब पाएगा, जैसे इंडेक्स एरर मिलेगी तो उस पे जाएगा, उसको हैंडल करेगा। अब जीरो डिवीजन एरर तो हो नहीं रही, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें, सी द आउटपुट ऑफ इट। सो अब ये इंडेक्स वाले पे चला गया, उसका तो हो गया काम डिवीजन वाले का। तो लेकिन जैसे इंडेक्स पे आया, वहां पे आया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट हुआ, इंडेक्स एरर रिकॉग्नाइज के, इनवैलिड इंडेक्स, जो भी आपने लिखा उसको दिखाएगा, और फिर फाइनली पे आ गया, प्रोग्राम एंडेड। सपोज इसको भी मैं रिजोल्व कर देता हूँ, 1 कर दिया। अब ये प्रॉपर काम करेगा, ये भी काम करेगा। अब यहाँ पे आएगा तो इस पे आपको एरर मिलेगी, नेम एरर, तो जब भी इसे मैच करेगा उस पे चला जाएगा। तो वहाँ पे जो भी मैसेज आपने लिखा है, तो ये उसी पे गया, तो उसके अकॉर्डिंग इसके मैसेज दिखाया। सो इट इज शोइंग यू जो इस तरह की एरर आ रही है वो भी लिख सकते हैं। अभी क्या है कि हियर वी आर राइटिंग मैसेज बाय आवर ओन। अब इसके और भी कई वेरिएशन है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब प्रीडिफाइंड है, प्रीडिफाइंड है तो कुछ प्रीडिफाइंड मैसेज भी इनके साथ होता है, जैसा आपने देखा भी था। अगर मैं 1 डिवाइड बाई 0 करूं, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0 करें, तो ये एक्सेप्शन का नेम भी दे रहा था और आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा था। तो हर एक एक्सेप्शन के साथ कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड होती है। अगर आपको इसको ही यूज करना है, इस मैसेज को प्रिंटिंग के लिए, आपको ये नहीं करना, या दोनों को ही करना है कंबाइन करके, कि अपने से भी डिफाइन करें और जो प्रीडिफाइंड है उसको भी करें, तो दोनों को कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो एक्सेप्शन के साथ आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी, मैं जीरो के साथ, जीरो डिवीजन एरर के साथ करता हूँ एज, और ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ ई। तो यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया, तो ई के अंदर ये मैसेज की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं को कंबाइन करूँ ना दोनों को, तो दोनों मैसेज आएंगे। अगर मैं कंबाइन करता हूँ, सी इसको मैं हटाता नहीं हूँ, अगर मैं अब यहाँ पे करूँ सपोज, या एक
काम करता हूँ, इस मैसेज की जगह मैं लिख देता हूँ एरर। तो इसका मतलब ये हमारा मैसेज है, हमने डिफाइन किया है। एंड कॉन्कैटिनेट, आफ्टर दैट आई एम राइटिंग ई हियर। सो हियर आई हैव रिटर्न इट। ये जो सेकंड वेरिएशन है, ये सेकंड वेरिएशन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सी नाउ, अगर अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, वो अभी तो नेम डिफाइंड हो, ये एरर ही नहीं आ रही ना अभी तो एक काम करते हैं, फिर से एरर सेट करते हैं, 0 कर देते हैं इसको। तो अभी 0 डिवीजन पे आएगा, अभी तो नेम पे चला गया। सो आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे देखो, ये हमने डिफाइन किया है और ये प्रीडिफाइंड जो मैसेज था उसी मैसेज को इसने रिटर्न कर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप चाहे जैसा एरर है उस बेस पे अपने आप मैसेज जनरेट हो जाए तो वो भी आप कर सकते थे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर अब ये केवल डिवीजन बाई 0 ही दिखाएगा। उसके बाद फाइनली आ रहा है तो प्रोग्राम एंडेड। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो। अगर मैं इंडेक्स एरर के साथ करूँ तो इसका मैसेज आएगा सी। अगर हम यहाँ पे देखें इंडेक्स एरर एज EX कर दिया सपोज हमने यहाँ पे, एंड EX, इसको मैं हटाया नहीं मैंने, सपोज ये दोनों को कंबाइन कर दिया। तो कई वेरिएशन हो सकते हैं, तो सिंपली ये या इसका वेरिएशन और इंडेक्स एरर क्रिएट करते हैं। इंडेक्स एरर क्रिएट करते हैं तो इसको तो रिजोल्व कर देते हैं। और अब इंडेक्स एरर क्रिएट करते हैं तो कोई इनवैलिड इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं। तो सी नाउ, यहाँ पे ये तो हमने डिफाइन किया और ये आपका प्रीडिफाइंड तरीके से आ रहा है। अगर मैं केवल EX लिख देता है जो भी वेरिएबल नेम दिया है तो केवल उसी मैसेज को दिखाता है। तो इट इज अप टू यू कि किस तरह से यूज करना है। इवन अगर हम यूज नहीं भी कर रहे हैं तो भी काम करेगा। आप सपोज नेम एरर है, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, तो और अगर नेम एरर अकर हो जाती है, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, तो अब ये नेम एरर आएगी इसमें सीधा, क्योंकि तो हियर सी नेम वाज नॉट डिफाइंड जो आपने की है। ये वाला जो अगर प्रोविजन यूज करना होता तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस तरह का प्रोविजन भी। सो जो भी वे आपको प्रॉपर लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, इसका मैं एक और वेरिएशन लेता हूँ और उसके लिए बेटर है कि मैं ना अलग प्रोग्राम ले लूँ। इसी में मैनिपुलेट करना ठीक नहीं है, वो चेंज हो जाएगा कोड। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी बताइए। जी, like right now we have mentioned explicitly like zero division, index error, name error. If we get an error which is neither of those three, will it still be caught in the try except or हाँ बिल्कुल, now? सबसे पहले वही तो किया था हमने, सबसे पहले तो कुछ नेम ही नहीं दिया। No, I get that, but in this situation now where we have explicitly listed it, do we have to also create a separate default except or will it still catch it? If there was like a fourth different type of error, like a attribute error or something that happens now. हाँ हाँ, so whatever error will be occurring, if you have explicitly written the name of that, it will go to that. If you have not, then it will go to the जो भी सबसे पहले आ रहा है, it will go to the Okay. that whatever you have defined first. उसका So भी agar अभी हाँ बताइए, tell me. agar right now if I got an attribute error, what would happen? एट्रीब्यूट एरर इफ यू विल बी गेटिंग, देन ऑब्वियसली अगर आप एट्रीब्यूट एरर मैंने हैंडल किया हुआ है कहीं पे उसके अकॉर्डिंग जाएगा, नहीं किया तो जो भी एक्सेप्ट है उसको ले लेगा जिसमें कुछ भी नेम नहीं दिखाया आपने। आर यू गेटिंग? Okay. But not like the traditional error that we were getting earlier and before classes when we didn't do any exception handling. नहीं नहीं वो नहीं, हाँ अगर आपने हैंडल किया तो फिर जैसा आपने हैंडल किया वही मैसेज आएगा, वैसे नहीं आएगा फिर, मतलब कोड एग्जीक्यूट होगा आपका। आर यू गेटिंग? Yes, sir. अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, एरर आ रही है लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर। Okay, sir. और अभी इसका एक और भी एक अच्छा तरीका बताता हूँ अभी नाउ। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज वन मोर इफेक्टिव वे ऑफ इट, जिसमें ऑटोमेटिकली उठाएगा। अगर कोई प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन आ रही है ना, अपने आप लेगा और अपने आप अकॉर्डिंगली उसका मैसेज देगा। वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इवन दैट। सो हियर किस तरह का एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट आपको बताएंगे। तो एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है हमारे पास, हमारा एक ऑलरेडी वी हैव यूज दिस मॉड्यूल, बहुत कई फंक्शन है, एक मॉड्यूल सिस मॉड्यूल। Within this sys module, there is one function known as exe underscore info, exception info. And when you are using it, and if any error is occurring in your code, it will give you the message accordingly. Means अभी हमने ये किया है, suppose I am removing all of these things.
or here you can use, I'm handling it and I'm writing this print, and suppose I have written error, अपने से मैसेज दे रहा हूं मैं और प्री डिफाइंड भी ले रहा हूं. प्री डिफाइंड के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ इट, दिस इज डॉट, इसलिए मॉड्यूल को यहाँ पे यूज किया, सिस डॉट एंड देयर इज वन फंक्शन विद इन इट exe_info, एक्सेप्शन इन्फो. सी उस वहीं से ही नेमिंग यूज की गई है. तो ये क्या करता है फंक्शन, व्हेनेवर एनी पर्टिकुलर एरर, जो भी एरर फर्स्ट टाइम अकर हो रही है आपके कोड में, उसी से रिलेटेड आपको मैसेज देगा. ये जो इनके मैसेज थे ना एक्सेप्शन के, मतलब उस एक्सेप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा. बेसिकली एक टपल रिटर्न करता है, ये एक टपल रिटर्न करता है जिसमें 3 आपके पैरामीटर होते हैं. पहला पैरामीटर एक्सेप्शन का नेम, सेकंड पैरामीटर उसका मैसेज, थर्ड उसका एड्रेस जहां पे वो आपका डिफाइंड है. सो सी अभी कौन सी एरर आ रही है मेरे कोड में, सबसे पहले अभी मैं ऐसे ही रखता हूं, कोड को चेंज नहीं करता. कौन सी एरर अकर हो रही है? नेम एरर. नेम एरर आ रही है. ठीक है, तो अभी नेम एरर है. इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, and here I'm giving exception handling example 2.py. तो सी इसने उसी से रिलेटेड आपको मैसेज दिया. एरर जो हमने लिखा है यहाँ पे, एरर कॉलन ऐसे डिस्प्ले हो, सो वी हैव स्पेसिफाइड इट कि किस तरह से इसको डिस्प्ले होना है. और इसने क्या किया, रिटर्न किया एक टपल रिटर्न की. इस टपल में 3 वैल्यूज हैं आपकी. पहला एक्सेप्शन का नेम, जो भी एक्सेप्शन आपका अकर हुआ उसका मैसेज, नेम सीडेक इज नॉट डिफाइंड, और थर्ड केवल एड्रेस. हालांकि इसको थोड़ा और बेटर बनाते हैं. आई डोंट वांट टू डिस्प्ले ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि इस तरह से आ रही इन्फॉर्म यूजर को उस तरह से इफेक्टिवली नहीं पता लग रहा. स्पेसिफिकली देख के पता लग रहा है अच्छा ये मेरे को मैसेज ही चाहिए सिंपल, ये एक्सेप्शन नेम जो भी आपको चाहिए. तो टपल है, टपल का मेरे को केवल सेकंड पैरामीटर चाहिए, तो आप लिख दो 1, तो अभी सेकंड पैरामीटर को रिटर्न करेगा. मेरे को केवल मैसेज चाहिए, तो एज पर योर केस यू कैन स्पेसिफाई. सो सी अब थोड़ा सा लुक बेटर हो जाएगा. तो इट इज शोइंग एरर नेम सीडेक इज नॉट डिफाइंड, ये एरर आई. अब सपोज अगर मैं यहीं पे एरर क्रिएट कर देता, 0 कर दूं इसको, तो अब कौन सी एरर आ रही है सबसे पहले, which error is occurring first now? Not divided by 0. बिल्कुल. सो सी मैंने मैसेज अपने से नहीं दिया यहाँ पे. इवन इसको आप हटा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये लिखेंगे तो अपने से मैसेज देगा. सी अब 0 डिवीजन की हो रही है, तो इसने मैसेज उसी से रिलेटेड दिया. अगर आपकी कोई और एरर आती है, सपोज इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एंड अब कौन सी एरर आएगी सबसे पहले, इंडेक्स एरर. इंडेक्स एरर. तो जो भी एरर आ रही है उससे रिलेटेड ये मैसेज ऑटोमेटिकली उठाएगा. अब ये दिखा रहा है लिस्ट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ रेंज. तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है यूज करने का. और अब मैं एक और सिनेरियो पे आता हूँ. यहाँ पे आपने देखा विद 1 एक्सेप्ट, बिना इसके भी आप काम कर सकते हैं. एक्सेप्शन का नेम भी दे सकते हैं. इवन इट इज ऑल्सो पॉसिबल विद 1 एक्सेप्ट यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल एक्सेप्शन नेम. अगर मैं यहाँ पे तीनों को यूज करूँ तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं. और ये सब ऑल्टरनेटिव वेरिएशंस हैं इसके. मल्टीपल है तो एक तो मल्टीपल जो भी होंगे वो कोमा सेपरेटेड होंगे. मैं तीनों को ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ. सो हियर वी हैव टेकन इट. और जब मल्टीपल है तो एक तो कोमा सेपरेटेड होंगे, और उसके लिए आपको पैरेंथेसिस को यूज करना पड़ेगा. ये तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी. सो हियर सिंगल के साथ जरूरी नहीं है पैरेंथेसिस, बट इसके साथ जरूरी है. अब यहाँ पे तीनों आपने बता दी कि इन तीनों में से कोई भी है तो इसको कंसीडर करेगा. लेकिन हमने बेशक ये 3 एक्सेप्शन नेम हमने स्पेसिफाई किए, बट स्टिल एट ए टाइम एक ही हैंडल करेगा. जो भी एरर फर्स्ट टाइम हो रही है यहाँ पे इनमें से तीनों में से जो भी हो रही है उससे रिलेटेड ये मैसेज आपको दे देगा. राइट. तो क्या मैसेज आएगा अभी मेरे प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम आपके सामने है, तो कौन से वाले को कंसीडर करेगा इन तीनों में से? इंडेक्स एरर. इंडेक्स एरर, क्योंकि इसको तो हमने रिजॉल्व किया, तो इंडेक्स एरर और उसके अकॉर्डिंग मैसेज देगा. तो आएगा भाई, बस हमने स्पेसिफिकली थोड़ा लिख भी दिया है यहाँ पे. तो जस्ट टू शो यू वन मोर वेरिएशन ऑफ इट. सी
सो हियर तो ये सब डिफरेंट वेरिएशन है एज पर योर सुटेबिलिटी, राइट, एज पर योर चॉइस you can make use of either of the variation of this handling the exception and this try except structures. फाइनली का यूज ये जरूरी नहीं है, अगर मैं यूज नहीं भी कर रहा है ना इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसका रोल तब होता है, इसका मैंने केस बताया भी था फाइल के केस में कि क्लोज फंक्शन है वो आए तो मैं सारा कोड यहाँ पे लिख दूं, लेकिन क्लोज फंक्शन को फाइल को क्लोज करने वाला कोड फाइनली में लिख दे, तो चाहे मेरा ये कोड चले ना चले फाइनली पे आएगा ही आएगा, तो क्लोज वाला फंक्शन कॉल होगा। तो वहाँ पे एक पर्पज हो सकता है फाइनली का, अगर मैं बिना फाइनली के भी कर रहा हूँ तो भी मेरा काम करेगा कोड, ठीक है ना, ये ऑप्शनल पार्ट है। बट हाँ ऐसा नहीं है आपने ट्राई किया और कोई एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ एक्सेप्ट डिफाइन ही नहीं किया, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो इट विल गिव यू एरर, सी एक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पासिंग, तो उस केस में ये आपको एरर देगा। एक ट्राई के साथ एटलीस्ट एक तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। Now with this we will proceed further. अभी हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो भी अभी तक जो भी केस मैंने लिए, इन दिस केसेस एक्चुअली एक्सेप्शन इज बीइंग रेज्ड ऑटोमेटिकली। जब भी कोई एरर आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली रेज होके आ रहा है एक्सेप्शन, और हम फिर उसको हैंडलिंग कर रहे हैं। हैंडलिंग के भी कई वेरिएशंस, कई ऑल्टरनेटिव वेज यहाँ पे दिखाए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। But what about if we want to raise the exception as per our choice? मैं decide करूं, we will decide that when a particular exception should be raised. हम specify करें, भी तो automatically ये generate हुए सब, तो कैसे करेंगे? Now we will focus on that. उसके लिए हम एक raise कीवर्ड यहाँ पे use करेंगे to raise a particular exception, and obviously हम अपने से जब exception raise करें तो we will specify condition to specify when a particular exception will be raised, means we will specify the error condition. We will specify कि अगर ये situation है, it should be treated as an error, and whenever this error is occurring, my exception should be raised and control should be shifted from our try block to accept block. So how can we do that? We will take, I'll be taking one example of that now. So for that purpose, you will be using raise, and you can make use of like this. See what I'm doing here. Here रिक्वायरमेंट क्या है मेरी कि आई एम टेकिंग सम वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और उस केस में मैं क्या कि अगर इफ यूजर इज एंटरिंग पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू, इट शुड बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल कंडीशन, एज करेक्ट फ्लो ऑफ माय कोड, करेक्ट कंडीशन। बट इफ यूजर इज एंटरिंग एनी नेगेटिव वैल्यू, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड एज एन एरर, एंड आई वांट टू हैंडल इट। जब भी एरर आ रही तो हम एक्सेप्शन रेज हो, वो भी हम बताएंगे कौन सा एक्सेप्शन रेज हो, एंड इट शुड बी हैंडल्ड। तो यहाँ पे क्या किया मैंने अपने कोड को ट्राई ब्लॉक में लिखा, हियर आई हैव यूज्ड ट्राई ब्लॉक एंड आई एम टेकिंग द न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द यूजर, एंड वी हैव स्पेसिफाइड इफ a less than equals to 0 means if user supplied value is negative or if it is 0, then we are raising exception. तो हमने बताया कि ये कंडीशन अगर आ जाए तो एक एरर की तरह ट्रीट हो, और अगर ऐसा एरर हो रहा है तो रेज करें एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली रेज करने के लिए आप यूज करेंगे रेज कीवर्ड, यू लाइट रेज एंड द नेम ऑफ एक्सेप्शन विच यू वांट टू रेज हियर। यहाँ पे मैंने वैल्यू एरर एक्सेप्शन लिखा है, ये भी प्रीडिफाइंड एक्सेप्शन है, एंड आफ्टर दिस यू कैन स्पेसिफाई मैसेज आल्सो। ये मैसेज भी यूजर डिफाइंड है, आप डिफाइन करोगे मैसेज। वैसे तो इसके साथ बाय डिफॉल्ट कोई मैसेज होगा, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट नहीं चाहता, आई वांट टू डिफाइन द मैसेज बाय माय ओन, तो उस मैसेज को पास कर दो यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले करना है। तो जब भी अगर ये सिचुएशन आ रही है, ये अगर ये वाली सिचुएशन है, एंटर करेगा रेज करेगा, जैसे ही रेज वाला सिनेरियो उसको मिलेगा सीधा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एक्सेप्ट पे। वहाँ पे आपने इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, वैल्यू एरर्स भी नहीं भी लिखेंगे तो भी ये एक्सेप्ट पे आएगा, और जैसे आपने हैंडल किया हुआ उसके अकॉर्डिंग ये करेगा। सी मैंने क्या किया, वैल्यू एरर इज वी। अब वी जो वेरिएबल है इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है, सो एज वी एंड प्रिंट वी, तो यही मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और इसके भी वेरिएशन जो हमने बताया उनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसके साथ भी। तो अगर मैंने यहाँ पे सी जैसे हमने एग्जीक्यूट किया कोड को, आप यूजर ने एंटर किया 1, तो ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये आपका एग्जीक्यूट होगा सीधा, और सीधा जो भी फॉलोइंग लाइन्स आपने लिखी होंगी इससे बाहर एक्सेप्ट के बाद अगर लिखे होंगे उनको फॉलो कर जाएगा, तो मीन्स इट विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली।
बट अगर आपने एंटर कर दिया यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी, ये कंडीशन ट्रू होगी, एंटर करेगा, यहाँ देखते इसको मिलेगा रेज एक्सेप्शन with this user error message, user defined error message, and control will be shifted to your accept block and it will handle it. तो यही मैसेज यहाँ पे इसने इसको आपको दिखा दिया. So in this way you can also decide when a particular exception can be raised by using raise keyword here. तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑटोमेटिकली हो, आप अपने से भी डिफाइन कर सकते, क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो सकती है. तो अभी क्या है कि टिल नाउ whatever exceptions we have taken here, all of these are predefined exception. But what about I want to define my own exception and I want to use like predefined exception? हम अपना exception define करें. So now I am going to take that part कि अपना exception हम कैसे define कर सकते हैं. So this is known as user defined exception. तो exception is nothing, it's a class. और इनहेरिटेंस हायरार्की के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जितने भी एक्सेप्शंस हमने जनरेट किए हैं ना, चाहे प्रीडिफाइंड हो या हम अपने एक्सेप्शन बनाए, ऑल ऑफ दीज एक्सेप्शंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम वन क्लास नोन एज एक्सेप्शन. उस क्लास का नाम ही है आपका एक्सेप्शन, राइट. सो जितनी भी एक्सेप्शन रिलेटेड क्लासेस है, ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस has been derived from exception class. एक क्लास है, एक एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या होता है? क्लास, जिसका नाम है एक्सेप्शन. ये कीवर्ड उसका नाम ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्लास. और यहाँ पे जब हम काम करते हैं इसको, so all the exception classes, और ये जो exception classes हैं ना आपकी, जो हमारी ड्राइव हुई हैं, these can be your built-in exceptions, zero division error, index error, ये सब हमारे built-in है. This can be built-in exceptions, और these can be user defined exceptions, चाहे वो हमारे built-in हो, predefined हो, या हम user defined अपने से define किए हो, जो भी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे. built-in exceptions हो या आपके user defined exceptions हो, everything will be derived from exception class. तो if I am using this fact, तो अगर मेरे को अपना exception बनाना है, user defined exception, it should also be derived from exception class. तो अगर मेरे को अपना exception बनाना है, एक तरीके से मेरे को एक अपनी क्लास बनानी है जो कि exception handling से related होगी, and it must be derived from exception, क्योंकि हमने बताया all the exception class are derived from it, and जो आप अपने से भी अपने भी एक्सेप्शन बनाएंगे ना, वो भी इसी से ड्राइव होना चाहिए आपका. सो सी द सिंटैक्स विल बी लाइक दिस. इनहेरिटेंस आपको पता ही है कैसे ड्राइव करते हैं. सो यहाँ पे सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस एग्जांपल को लिया है, उसमें थोड़ा सा ना मैनेज करने के लिए हायरार्की और यूज कर लिया मैंने. जैसे सी, अब एक्सेप्शन डिफाइन करना है अपना, तो बेसिकली इट्स अ क्लास एट विच मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम एक्सेप्शन. तो मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाई, क्लास एरर, यहाँ पे क्लास एरर, एंड इट शुड बी ड्राइव फ्रॉम एक्सेप्शन, तो ये ड्राइव एक्सेप्शन. तो उसके बाद दो एक्सेप्शन बनाए मैंने, वैल्यू टू स्मॉल एरर, वैल्यू टू लार्ज एरर. कोई कोड नहीं लिखा तो पास कर दिया सिंपली टू कंप्लीट द बॉडी पार्ट ऑफ इट, एंड दीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम एरर. मैं डायरेक्टली भी बना सकता था वैल्यू टू स्मॉल एरर, वैल्यू टू लार्ज एरर, एक्सेप्शन लिख के, लेकिन ये जस्ट सिंपली मैनेज करने के लिए हमने इसको लिखा है. एक्चुअली इस लिखने से क्या हुआ, एक्सेप्शन क्लास है, अगर इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देके ना डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप. इसका पर्पज क्या है बेसिकली कोड का, मैं दो एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, वैल्यू टू स्मॉल एरर, वैल्यू टू लार्ज एरर. किस लिए कि सपोज मैंने एक वैल्यू एंटर की किसी वेरिएबल में 10, तो अगर यूजर एंटर करता है कोई भी वैल्यू जो इससे कम है, तो it should be treated, this situation should be treated as an error, and it should raise this value to small error exception. Agar user is entering any value which is more than 10, it should also be treated as an error, and for that another value to large error exception should be raised. And if user is entering 10 which is matching with this, it should be treated as a normal condition. तो ये मेरा कोड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो बिना किसी एक्सेप्शन के. तो इस तरह की एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट बनाइए, मेल फोकस है सिंटैक्स पे.
तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अपने एक्सेप्शन बनाना है तो एक तरह से अपनी क्लास बनानी है जो ड्राइव हो रही है एक्सेप्शन से। तो ये वैल्यू टू स्मॉल एरर, एरर से ड्राइव है, एरर ड्राइव एक्सेप्शन, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसी से ड्राइव है, डायरेक्टली भी लिख सकते थे। क्योंकि एक्चुअली अगर सिनेरियो को देखें हम तो सिनेरियो तो कुछ इस तरह का ही हो रहा है ना। इस केस में हमने क्या किया कि एक एक्सेप्शन क्लास बनाई है, एक्सेप्शन ऑलरेडी है, ये तो बनाने नहीं है तो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, और इससे हमने क्लास ड्राइव किया एरर। तो ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए एक हायरार्की को इंक्रीज कर दिया गया है कि जो यूजर डिफाइंड है वो उनके लिए भी। तो हमने क्या किया, एरर, क्या नाम दिया हमने, एरर, ठीक है एरर, और एरर वैल्यू टू स्मॉल, फिर हमने ड्राइव किया इससे दो एक्सेप्शन, value to small error and value to large error। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने बस एक हायरार्की लेवल बढ़ा दिया है एरर। अगर मैं डायरेक्टली भी वो करता तो ये नहीं होता कि हमने अपने से बनाया तो उसको लिए भी एक और हायरार्की लेवल कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। सो हियर अब आते हैं प्लेन कोड पे। सो हियर मैंने अब इनको यूज करेंगे हम अपने तरीके से, तो यहाँ पे तो कंप्लीट कर दिया, डिफाइन कर दिया, अब इनको यूज करते हैं। तो हमने एक लूप चलाया व्हाइल ट्रू, अगर ट्रू एंटर कर जाएगा ट्राई, वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम द यूजर इन दिस वेरिएबल एंड इफ द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज लेस देन फ्रॉम दिस नंबर 10 इट शुड रेज वैल्यू टू स्मॉल एरर, और जैसे ये रेज होगा कंट्रोल शिफ्ट होगा आपके वैल्यू टू स्मॉल एरर पे, राइट। एंड इफ अगर नहीं है, अगर ये इफ इट इज ग्रेटर देन दिस देन इट शुड रेज अनदर एक्सेप्शन एंड इट विल मूव ऑन टू दैट, अगर ये वाली सिचुएशन है। और अगर नहीं है तो ये सिंपल जो भी मैंने लाइन ऑफ कोड लिखी होंगी लास्ट में इट विल फॉलो दैट। तो लास्ट में हमने एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इफ यू लुक एट इट, कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट करेक्टली, इसके बाहर लिखा है लूप के, राइट। तो अब सी क्या होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल आस्क फॉर द वैल्यू। अगर मैंने 15 किया, 15 करते क्या हुआ, जैसे 15 एंटर किया तो ये वाली सिचुएशन आपकी ट्रू हो गई, एंटर कर गया यहाँ पे वैल्यू टू लार्ज एरर। जैसे ही रेज किया गया तो तुरंत कंट्रोल शिफ्ट होगा आपके वैल्यू टू लार्ज एरर पे, और यहाँ पे अपने एक मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है तो यही मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर कम वैल्यू है 10 से तो वो भी उसके लिए वैल्यू टू स्मॉल एरर रेज होगा, और जो भी आपने मैसेज दिया उसके लिए वो मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप 10 एंटर करें तो कोई भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपल ये एग्जीक्यूट करेगा और कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। नेक्स्ट फॉलोइंग लाइंस जो भी लिखी होंगी आपने उन पे जाएगा एंड डिस्प्ले द आउटपुट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कांग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप देखो आपने एक्सेप्शन इस तरीके से बनाया है कि इसमें ना आप अपना यूजर डिफाइंड मैसेज नहीं दे सकते। जो EX वाला जो E वाला जो सिनेरियो है ना, इस वाले केस में वो यूज नहीं कर रखा है हमने, क्योंकि कोई यूजर मैसेज नहीं दिया, वो तो हमने जो प्रिंट कराया मैसेज वही आ रहा है। लेकिन अपने से लेना हो उस तरह का सिचुएशन अगर आपको ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे, अपना एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे ना। आई टेक वन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो। तो सिंपल सिंटैक्स था, एक और एग्जांपल लेते हैं अपनी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। अब इस वाले एग्जांपल में मैं करने क्या जा रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बेसिकली सी आई एम टेकिंग वन केस, सपोज हम हियर आई एम टेकिंग द केस ऑफ कि कोई कॉलेज है, कॉलेज में कई सेक्शन बनाए हुए हैं इसी बैच के लिए, कई सेक्शंस बने हुए हैं। और जब हम सेक्शंस की बात करते हैं, क्या नंबर ऑफ सेक्शंस की वैल्यू 0 हो सकती है या नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव तो होगी नहीं, बट कैन वी यूज 0 फॉर नंबर ऑफ सेक्शंस? उसका कोई मीनिंग है? हाँ No, जी sir. उसका तो कोई मीनिंग है, एटलीस्ट एक सेक्शन तो होगा ही ना, एक तो होगा ही होगा कम से कम। तो यही हमें ट्रीट करना है कि अगर यूजर में नंबर ऑफ सेक्शंस की लीक को रेफर करने के लिए वैल्यू ले रहा हूं यूजर से, एंड इफ द वैल्यू फॉर दिस नंबर ऑफ सेक्शन इज 0 और नेगेटिव, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एरर कंडीशन। और अगर इस पॉजिटिव है तो इट शुड वर्क इन अ नॉर्मल वे, राइट। तो इसके लिए हम अपना एक्सेप्शन बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि हम अपना मैसेज भी पास कर सके, राइट।
So here I am going to create that. So here now we will be writing code for that. तो कुछ एक्सेप्शन बनाते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप. सपोज मैं दे देता हूँ इनवैलिड वैल्यू एरर, अपने से नेम देंगे. एंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग आवर ओन एक्सेप्शन इट मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास. तो इनहेरिटेंस हर के ध्यान रखेंगे, तो एक्सेप्शन से मैं इसको ड्राइव, इससे होना ही होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्शन का पार्ट नहीं बनेगा. और I want to define my exception in such a way so that we can specify user message also. तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपली हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और मैं एक पैरामीटर पास कर सकूं जो यूजर मैसेज की तरह. तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें एक पैरामीटर हम पास कर सके इस क्लास के लिए. तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया एंड हियर वी हैव रिटन सेल्फ, और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को लेनी है इसी को एरर मैसेज की तरह ट्रीट करेंगे फर्दर. तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया विच विल टेक वन वैल्यू, तो एक वेरिएबल भी बना लिया एंड वी आर पासिंग इट. और व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले द आउटपुट इन ए स्पेसिफिक वे, व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले आवर आउटपुट इन ए स्पेसिफिक वे, व्हाट वी डू, कैसे हम बताते हैं कि मेरी वैल्यू इसी तरीके से प्रिंट हो, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिंट हो. प्रीवियस सेशन में हमने लिया हुआ ये क्या यूज करते हैं, बताया था ना कि पॉइंट की तरह ही प्रिंट करना था वैल्यू को, या कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib इस तरह के फॉर्मेट को i को लेके करना था. वैसे तो पाइथन में j यूज होता है डिफॉल्ट. तो क्या बताया था आपको, क्या यूज करते हैं, कुछ मैजिकल फंक्शन बोलते हैं जिनको, एक फंक्शन बताया था आपको, क्या नाम था उस फंक्शन का, डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, या इसकी जगह डबल अंडरस्कोर repr डबल अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं. डबल अंडरस्कोर repr डबल अंडरस्कोर भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है. सो हियर तो मैंने यहाँ पे बता दी कि कैसे रिटर्न, तो मैं चाहता हूँ यूजर जैसे एंटर कर रहा है मैसेज वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाए. तो हमने यहाँ पे बता दिया कि रिटर्न, और जो भी इंफॉर्मेशन यूजर पास करेगा सेल्फ डॉट डेटा जो भी पास कर रहा है वो एज ए स्ट्रिंग मेरा प्रिंट हो जाए. तो बस हमने ये बता दिया कि वो एज ए स्ट्रिंग बस प्रिंट हो, स्ट्रिंग की तरफ प्रिंट हो जाए वो मैसेज, ये रिटर्न करा दिया. तो इसके साथ जब भी मैं क्लास को रेफर करूंगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा वैल्यू का. अब हम इसको करेंगे यूज, डिफाइन कर दिया. अब हम अपनी सिचुएशन पे आते हैं. तो मैंने क्या किया, ट्राई जैसे भी आप चाहें यूज कर सकते हैं. सो हियर ट्राई, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज num underscore section and I am taking the value for this from the user. तो मैं डायरेक्टली नंबर लेना है तो कन्वर्ट का कोड पहले लिख दिया, इनपुट यूजर को प्रॉम्प्ट कर देते हैं किसी मैसेज से, एंटर नंबर ऑफ सेक्शंस सपोज क्लोज, ठीक है. एंड हियर वी आर नाउ वी विल हैंडल इट, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी ले लेगा भी तो वैल्यू, ये 0 भी ले लेगा, बट ये तो एरर की तरह ट्रीट होना चाहिए, तो इसको हमने हैंडल कर रहा है. इफ नंबर ऑफ सेक्शन वैल्यू इज लेस देन 1, अगर 0 है नेगेटिव है, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज एरर कंडीशन. और अगर ऐसा है तो आई एम रेजिंग माई एक्सेप्शन. तो रेज, और आपका जो एक्सेप्शन नेम है उस नेम को मैंने यूज किया. तो अब यहाँ पे इसको ऐसे यूज कराओ जैसे प्रीडिफाइंड को हम यूज करते थे, रेज इनवैलिड वैल्यू एरर, और इसके साथ ऐसा कंस्ट्रक्टर भी है जो एक वैल्यू ले सकता है और वही मेरा यूजर ये एरर मैसेज बनेगा. तो सपोज यहाँ पे कुछ भी मीनिंगफुल एरर मैसेज दे दो. सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ सेक्शंस कैन नॉट बी लेस देन 1, कुछ भी जो भी मीनिंगफुल आपको दिखाना है, यूजर डिफाइंड. और इसको हैंडलिंग का भी कोड लिखते हैं. अब अगर रेज करें तो हैंडल भी करना है, हैंडल करना है तो एक्सेप्ट. और एक्सेप्ट में भी इसको हैंडल करना है तो आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे, और अपने से इस केस में आप अपने से एरर दे सकते हैं, कुछ भी प्रिंट अपने से मैसेज देंगे, एक्सेप्ट प्रिंट, और जो भी है एरर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कोई भी मैसेज जो भी आप पास करना चाहें यू कैन राइट डाउन दैट, सो इट विल वर्क अकॉर्डिंगली. लेकिन थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं बना,
लेकिन चलो ट्राई करके देख लेते हैं। वो जो वेरिएशन मैंने बताए थे ना आपको प्री डिफाइंड, तो यहाँ पे भी काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन को यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन डॉट पी वाई, सपोज ये नेम दे देते हैं इसको। सो इट इज आस्किंग नंबर ऑफ सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ कुछ नॉर्मल वैल्यू 2, तो ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा। इंडेक्स ऑफ रेंज, नंबर ऑफ सेक्शन प्रॉपर किया है, एक किया है, क्लोज भी किया है, ठीक है, सही है। सो हियर इफ आई एम एक्सिक्यूटिंग इट, enter number of sections, तो सिंपल प्रॉपर काम कर रहा है, जो भी है उसी को ले लिया इसने। बट इफ आई एम, अब हम एरर क्रिएट करते हैं स्पेसिफिकली। अब मैंने कर दिया नेगेटिव वैल्यू एंटर यहाँ पे, तो सी इसने दिखाया एरर, आपने जो भी यहाँ पे दिखाया उसी को प्रिंट कर दिया। बट आई वॉन्ट टू गेट दिस आल्सो, तो वो वेरिएशन है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी, अगर आपने ऑलरेडी कुछ मैसेज ऐड किया हुआ है इसके साथ, तो आप पूरा वेरिएशन यूज कर लो। अब जो हम करते थे एज कुछ भी वेरिएबल नेम लिख लो ई, और अब मैं दोनों को करना चाहूँ अगर, तो सी मैंने इसको किया, या खाली ई भी लिखते तो फिर यही मैसेज आता, अब दोनों आएंगे। तो इट इज योर केस, इट इज योर चॉइस कि क्या यूज करना है। सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो अगर मैं यहाँ पे अब नेगेटिव वैल्यू पास करूँ या 0 पास करूँ, 0 भी एरर की तरह ट्रीट होगा। सो जैसी एरर आएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आया रेज हुआ तो यहाँ पे आ गया, एज ई लिखा है, ई प्रिंट किया है, तो ई की वैल्यू ये होगी जो आपने यहाँ पे ऐड की है। सो हियर इफ आई एम यूजिंग सी, इट इज शोइंग एंड एरर नंबर ऑफ सेक्शन कैन नॉट बी लेस देन 1। और अगर आपने प्रॉपर वैल्यू एंटर कर रहे होते, सपोज अगर मैं सब 10 करूँ, सो इट विल जस्ट, जो भी आपको करना है तो इट विल जस्ट प्रिंट इट, क्योंकि नॉर्मल फ्लो किया, ये फॉल्स हो गया, जो भी आपने कोड लिखा उसको फॉलो करेगा सिंपली। So in this way you can define your own exception also, right? जिसमें आप अपने से मैसेज वाली प्रोविजन भी दे सकते हैं। तो ये हमारा यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जिसको हम कस्टम एक्सेप्शन भी बोल देते हैं, मतलब हम कस्टमाइज कर अपने तरीके से। एक ये वर्ड भी आ जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बोल देते हैं, या इसको हम कस्टम एक्सेप्शंस भी बोल देते हैं। हम कस्टमाइज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। सो हियर, सो दिस इज अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज किसी एक रिक्वायरमेंट के लिए आई हैव रिटन 2 कोड, सेम रिक्वायरमेंट है, फॉर सेम रिक्वायरमेंट आई हैव रिटन 2 कोड। One code is without exception handling and another code for the same is with exception handling. Which one will be faster? कौन सा कोड ज्यादा फास्टर होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ वाला कोड या विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला कोड? What do you think? एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, because it catches it. ध्यान से देखो, see when we are using our code with some exception, so obviously we are using some extra classes, extra object, and when you are using some extra object, obviously we require extra memory also, and even we require extra resources also to process it. Are you getting? So which will make it slower or faster? Slower. It will make it slower. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ, हाँ ये हमारी डिपेंड है कि इफ यू आर श्योर अबाउट योर कोड दैट मेरा कोड एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं है, तो आप बिना उसके ही करें। हाँ, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि ठीक है लिटिल बिट स्लो करता है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट है हमारी कि सपोज फाइल ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं
और यूजर ऐसा नेम दे दे जो है ही नहीं वहां पे फाइल, तो उस तरह का हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन रेज होने से अच्छा उसको मैसेज दे दे यूजर को, तो तब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जाएंगे। अदरवाइज विद एक्सेप्शन हैंडलिंग के बिना वाला जो कोड है वो फास्टर होता है, बट कुछ सिचुएशन में ये जरूरी होता है कि हम यूजर को प्रॉपर मैसेज दिखाएं। ठीक है, so this is about exception handling. Now in the remaining time, now I'm giving you one exercise based on this exception handling also. I'll be sharing that just a bit. So now in the remaining time today, you will be trying all these exercise. सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कल दी है वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, अगर कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कल थोड़ा कम टाइम मिला था आपको प्रैक्टिस के लिए, और आफ्टर दैट यू विल ट्राई दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सरसाइज। ठीक है, so now you can have a break and we will continue this session after break. It's 11:50, so we will continue our session at 12:05. Till then you can have a break. तब तक मैं रिसोर्सेज और एक्सरसाइज वगैरह भी शेयर कर दूंगा। ठीक है।
Okay, students, so I have shared all the resources and lab exercise 11 in Google Classroom. This lab exercise 11 is based on exception handling that we have just covered. So now you will practice in the remaining time you will do the practice on the exercise given और कोई भी doubt या कोई भी query आपकी होती है related to our object-oriented programming session or this or any session that we have covered so far you can discuss your doubts with me. हेलो सर Yes, tell me. गुड आफ्टरनून सर मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक वी वर डूइंग द क्वेश्चन yesterday ऑफ like displaying the records if we have some person's account in our program. So how can we connect a database to that? Like I have studied, so we can we connect the database using Yes, this program? next we will be taking that part. How Okay, can sir. we interact with database through our Python environment, right? Okay, okay, sir. Then your Thank you. question will be answered after that session. Okay, thank you, sir. हेलो Yes, tell me. सर वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए अच्छा, ओके ओके, ठीक है. हाँ गूगल क्लासरूम अच्छा, तो अभी वो एक्सेस आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई महावीर? नहीं कर पा रहे लोग? नहीं सर नहीं नहीं हो पा रहा है मैंने कॉल किया था फिर हुआ ही नहीं वो हो ही नहीं पा रहा है वापस में वही प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा होना तो नहीं चाहिए. सर मैं तो किससे एक कांटेक्ट करूं तो बाकी स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, तो आप किसी भी अपने क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए वो कैसे कर रहे हैं, है ना? ठीक है बाकी मैं शेयर कर देता हूँ, वीडियो शेयर कर देता हूँ, अभी मैं डाउनलोड करके उनको शेयर कर ठीक देता है हूँ. थैंक यू
Yes, tell me. Am I audible, sir? Yes, yes, Pransu, tell me. सर लैब एक्सरसाइज 10 का सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए. Lab exercise 10. हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है प्रांशु? करना क्या है ये जानना है या कोई यस कंफ्यूजन यस है? यस, करना क्या है सर? इसमें बेसिकली सी, जैसे आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट में जो दिख रहा है ये आना चाहिए. जैसे टीचर है, वो टीचर के लिए चॉइस है 1, ऑफिसर के लिए 2. सो इफ आफ्टर दैट इट शुड आस्क द एंटरिंग द चॉइस. अगर आपने चॉइस में 1 लिखा तो इट शुड आस्क द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर. अब अगर टीचर की बात करें तो टीचर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? एज यू नो, एज पर द क्वेश्चन, टीचर इज द ड्राइव्ड क्लास ऑफ स्टाफ. स्टाफ में ऑलरेडी 2 एट्रीब्यूट है, कोड एंड नेम. और टीचर के साथ देखिए 2 और एट्रीब्यूट है यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड पब्लिकेशन. सो विद टीचर यू हैव 4 इंफॉर्मेशन. विद टीचर 4 इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल ओके, टू तो यू. कोड, टीचर को प्रिंट नेम, कराना विथ सब्जेक्ट, 4 पब्लिकेशन. इन्फॉर्मेशन. हाँ, तो टीचर के ठीक है केस में सर. चॉइस 1 है तो इट शुड आस्क द वैल्यूज फॉर कोड, नेम, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन. आफ्टर दैट डिस्प्ले दीज. ठीक है, तो उसी पे बेस आप अपने मेथड बनाएंगे वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए और फिर उन वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए. सेम यू विल बी डूइंग विद अदर्स. जो जो ओके इंफॉर्मेशन सर. आएगी एज पर द फ्लो, वो आपको उनको वैल्यू को लेना है, मतलब यूजर से एंट्री करा दो, इंफॉर्मेशन वैल्यू एक्सेप्ट करे, उनको डिस्प्ले करे. दैट यू नीड ठीक टू है डू. सर. ठीक है. ओके, थैंक यू. Okay, I have uploaded the video lecture for PGDI and I am doing the same for PGDBDA also.
Okay, students, so you can continue practice and we will continue this lab practice session in second half from 2:30. So अभी अगर query नहीं है presently तो session close करें. Yes, sir. Okay, so here I am closing this session and we will meet again at 2:30. हाँ बताइए. Exercise 11 की question 8 में Which exercise? Write a file that is not writable. Exercise 11 question. Yes, Akhil, can you repeat? Your voice is not clear actually. Can you repeat, please? Akhil. Exercise 11 question 8. Exercise 11, question number 8. Try to open and write a file that is not writable. Means basically, you are trying to, means you have chosen read mode for the file, but you are trying to perform write operation on that. So obviously we will be getting exception for that. So you need to handle that. Okay, sir. If there is any other query, you can ask. Okay, so here I am closing the session and we will meet again at 2:30. Okay, sir.